With the blessings of our founder chairman of SAMES, respected Dr. Vinod Bhandari sir, benevolence and guidance of Chancellor Sri Aurobindo University, respected Dr. Manjushri Bhandari ma'am, we have gathered here for much awaited white coat ceremony for first year MBBS and BDS students of 21-22 batch. I request Dr. Jayashri Taparia ma'am, HOD Physiology, to please escort Honorable Chief Guest Dr. Ramakant Panda, Padma Bhushan, on the stage. Now I request all the volunteers to please escort our dignitaries, respected Founder Chairman Dr. Vinod Bhandari sir, respected Chancellor Dr. Manjushri Bhandari madam, respected Pro-Chancellor, Sri Aurobindo University, Dr. Mohit Bhandari sir, respected Pro-Chancellor, Dr. Mahek Bhandari sir, Vice-Chancellor, Madam Dr. Jyoti Bindal, respected Dean sir, Dr. R.R. Vavre sir, Dean Dental College, Dr. Kanteshwari madam, Convener of MCI Regional Center, Dr. S. Bose madam on the stage, and Director Professor Anatomy, Dr. S.D. Joshi sir. Please, volunteers, help them to escort on the stage. Thank you. Now I would like to request Dr. Jayashri Taparia ma'am, Convener Curricular Subcommittee and Head of Department Physiology, to please felicitate our Chief Guest, Dr. Ramakant Panda, with the fruit basket. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Manjunath sir, Head of Department Anatomy, to please felicitate Dr. Manjushri Bhandari madam with the fruit basket. I would like to request Dr. Kavita Ratti ma'am, HOD Biochemistry, to please felicitate our founder chairman, SAMES, respected Dr. Vinod Bhandari sir, with the plant as a token of gratitude. Thank you, ma'am. I would like to request Dr. Prachi Shaw ma'am, Head of Department Microbiology, to please felicitate Pro-Chancellor Sri Aurobindo University, Dr. Mohit Bhandari sir, with the plant as a token of gratitude. Thank you, ma'am. Now I would like to request Dr. Amit Verma sir, HOD Pathology, to please felicitate Pro-Chancellor Dr. Mahak Bhandari sir with the plant. I request Dr. R.K. Jha sir, Head of Department Medicine, to please felicitate Vice Chancellor Sri Aurobindo University, Dr. Jyoti Bindal ma'am, with the plant as a token of gratitude. Now I would like to request Dr. Manoj Kela sir, Head of Department Surgery, to please felicitate Dean of SAMES, Dr. R.R. Vavre sir, with the plant.
In his absence, I would like to request Dr. Pooja Reddy ma'am to please felicitate our Dean sir. I request Dr. Shraddha Jaiswal ma'am, Professor and Head Oral Pathology, to please felicitate Dean of Dental College, Dr. Kanteshwari ma'am, with the plant. I request Dr. Praveen Arora sir, Head of Department Forensics, to please felicitate Convener MCI Regional Center, Dr. S. Bose ma'am, with a plant as a token of gratitude. I request Dr. Rupa Chapawal ma'am, Professor Anatomy, to please felicitate Dr. Director, Professor of Anatomy, S.D. Joshi sir, with the plant. Thank you, respected sirs and madam. Now I request all the dignitaries present on the stage to officially inaugurate today's ceremony by lighting the lamp. शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां जीवन का हर पथ सवारो जीवन का हर पथ सवारो ऐसी ज्योत जगारो शारदे मां शारदे Thank you, respected sirs and ma'am. I, Dr. Kudrat Bangu, Assistant Professor from Department of Physiology, am going to be anchor for today's white coat ceremony. To start today's program, I would like to request Dr. Jayashree Taparia ma'am, Convener Curricular Subcommittee and Head of Department Physiology, to deliver welcome address and give a brief introduction about Honorable Chief Guest, Dr. Ramakant Panda.
Very good evening, everyone. It is my honor today to welcome our chief guest, Dr. Ramakant Panda. He is the chief consultant for cardiovascular thoracic surgery and the group CEO of the Asian Heart Institute in Mumbai. Dr. Ramakant Panda has performed about 28,000 successful cardiac surgery as of 2022, including over 1900 redo bypass surgeries. Dr. Panda is also called one of the safest heart surgeons in the world and the surgeon with the safest hands. He holds the world record for performing a 12 graft procedure in a man with 17 blocks in 2014. He is recognized for pioneering many techniques in cardiac surgery. Dr. Ramakant Panda is credited and recognized among his peers as one of the first in India to introduce total arterial revascularization, as well as being one of the pioneers of off-pump bypass surgery. Redo bypass surgery, and the high-risk surgeries. He is particular about bringing the latest medical advances to India. Asian Heart Institute was the very first hospital in Western India to employ the Da Vinci surgical system. He is confirmed the Padma Bhushan, the third highest civilian award in India by Pratibha Patil, the President of India in 2010. And also many more awards. Largely a very humble man, known for his philanthropy and mild manners, Dr. Panda is respected for his ethics. For all his stellar achievement, he has had incredible, humble beginnings. Born in the Damodarpur village of Jajpur district in Orissa in 1954, he is the son of a farmer who has proved that perseverance and persistence can fulfill the most ordinary person's dream. Welcome, sir. Thank you, ma'am, for enlightening our audience about our honorable chief guest. Now I would like to request Dr. Mahek Bhandari, sir, Pro-Chancellor Sao, to say a few words. So, respected chairperson, respected chief guest, Dr. Ramakant Panda sir, all the dignitaries on the dais, और मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, उनके पेरेंट, मैं सबका स्वागत करता हूँ. आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वाइट कोट सेरेमनी हम लोग जब MGM में पढ़ते थे तो बोस मैडम ने वहाँ पे स्टार्ट करी थी वहाँ से, और आज ये इम्प्लीमेंट हुआ है. मध्य प्रदेश में पहली बार 2011 से इसी कॉलेज से इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे. तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ. मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी पेरेंट्स जो लोग आए हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या यूनिवर्सिटी में कोर्सेज उपलब्ध हैं, मैं उनके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा मैं. सो ये दिस इज़ द एरियल व्यू ऑफ द सेम्स कैंपस. आप सब लोग सेम्स कैंपस में रहते हैं, आपने देखा है ये सब सेम्स की सब बिल्डिंग है. इट्स 911 फीट लॉन्ग बिल्डिंग विद ऑल द कॉलेजेस. दिस अगेन द एरियल व्यू ऑफ शोइंग द लैंडस्केप. यहाँ का पूरा गार्डन का श्रेय मेरी मदर डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, शी इज़ द चेयरपर्सन, उनको जाता है. दिस आर दी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, दी नर्सिंग कॉलेजेस के भी हॉस्टल्स और बाकी जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये भी इस पिक्चर में दर्शाए जा रहे हैं. देन द कोर मैनेजमेंट, दिस इज़ माई फादर डॉक्टर विनोद भंडारी हु इज़ द फाउंडर चेयरमैन. डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, शी इज़ द चीफ चेयरपर्सन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. My brother Dr. Mohit Bhandari, he's a laparoscopic bariatric surgeon, and his wife Dr. Shilpa Bhandari, she's a IVF specialist, and myself, I am the general secretary of this institute and the pro-chancellor, and my wife Dr. Shweta Bhandari, she is a fetal medicine expert. So हम लोग, we are the core people of SAMES, and these are the core people of the university. Our vice chancellor Dr. Jyoti Bindal ma'am and our registrar Dr. Anand Mishra sir. And these are the medical dean, Dr. Vavre and Dr. Kanteshwari ma'am,
डॉक्टर वावरे हमारे साथ काफ़ी समय से हैं, 23 साल का इनको एक्सपीरियंस है और पीएसएम के एचओडी के बाद से ही इज़ द डीन राइट नाउ। एंड कांतेश्वरी मैडम 2013 से यहाँ पे प्रिंसिपल हैं। सो दिस यू हैव सीन इन द वीडियो। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा बस ये कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। मेरे फादर ने और मेरी मदर ने एक डिस्पेंसरी 1980 वे बैक इन 1980 वहाँ से स्टार्ट किया था। जब उनका MBBS का कोर्स जब ख़त्म होने के बाद में जब वो इंटर्न थे तब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आज तो इंटर्नशिप में आप लोग सब इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन उस समय के बाद 1980s में दे हैड स्टार्टेड अ डिस्पेंसरी एट परदेशीपुरा वेयर वी स्टिल लिव। देन 1986 they started with a 30-bedded hospital named as BH, जहाँ पे मेरी मदर आज भी प्रैक्टिस करती हैं। एंड in 1993 we started with a 100-bedded hospital, Bhandari Hospital Research Center. Then a Health Wizard India insurance company. देन वी वे दी फर्स्ट, हम लोग पहले व्यक्ति थे जो कि मेरे फादर मदर ने पैरामेडिकल कोर्सेज मध्य प्रदेश में स्टार्ट करे थे 1997। एंड देन वी स्टार्टेड इन 1998 अ कॉलेज ऑफ इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देन इन 1999 वी स्टार्टेड विद ब्लड बैंक सर्विसेज, क्योंकि इंदौर में इतना कुछ डेवलप नहीं था तो ब्लड बैंक सर्विस स्टार्ट हुई थी। एंड 2001 में पहली बार इंदौर शहर में ओपन हार्ट हुआ था, जो कि मेरे फादर मदर ने स्टार्ट करा था भंडारी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में ही। एंड देन वी स्टार्टेड विद अ नर्सिंग कॉलेज। एंड वे बैक इन 2003 वी स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर सेम्स। ये पहले एक 300-बेडेड हॉस्पिटल था, आप लोग सब इमेजेस देख रहे थे वीडियो प्लेबैक में, और उसके बाद से एक आज 1400-बेडेड हॉस्पिटल है। देन वी स्टार्टेड विद अ मेडिकल कॉलेज, अ नर्सिंग कॉलेज, allied health science college, then a dentistry college, and now in 2020 we are a university named as Sri Aurobindo University. And in 2022 we had started with the Sri Aurobindo College of Institute of Law. So these are the group institutes, the medical, dental, nursing, and the other hospital, Bhandari Hospital Pardeshipura, the Bhandari Hospital Vijayanagar, and Mohawk Bariatrics and Robotics, and Law College. So this is the SAMES Hospital building. So SAMES Hospital की building, it is NABH accredited, full accredited, and NABL accredited lab, or it has got 1400 beds with all these specialty ICUs, medicine, surgical, neonatal, pediatric, neuro, CTVS, and high-risk ICUs, or it is recognized by all the government agencies like the Ayushman, ESIC, CGHS, RBSK. And there are 17 operation theatres in this particular hospital with a dedicated robotic center. This is the only medical college which has got a dedicated robot, and it is a center for excellence in robotic surgery. Then we do all the congenital heart ki sabhi, we do all the surgeries, then we do cochlear implant. And we have got a dedicated cancer hospital with all the cancer surgeries, medical oncology, radiotherapy units, and all type of infertility surgeries, and specialized work in neurophysiology, neurology, rehabilitation, palliative medicine, and bone marrow transplant and kidney transplant. And SAMES अरविंदो अस्पताल ने कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करा था। इनफैक्ट पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करने का श्रेय अरविंदो अस्पताल को जाता है, जिसमें पूरा श्रेय मेरे रेसिडेंट्स और मेरी फैकल्टी मेंबर को जाता है और मेरे स्टाफ को। एंड इन सेंट्रल इंडिया वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें कि ये सब सुपर स्पेशलिटीज़ आर अंडर वन रूफ ओनली, with PET scan, gamma camera, all the super specialty units are the DRCR system, mammography, CT scan, MRs, EG, MG, molecular biology lab, and जो नई टेक्नोलॉजीज है लाइक द न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, प्रीनेटल स्क्रीनिंग, फ्लो साइटोमेट्री, जीन सिक्वेंसिंग। आप लोग जो अभी फिजियोलॉजी और एनाटमी में आप लोग जो आज पढ़ते हैं, जब ये जो जीन सिक्वेंसिंग ये सब होती है, एक्चुअली आजकल होती है। जब मैं 2002 में पढ़ता था तब हम लोग सब सिर्फ सुनते थे, पर आज होती हैं ये सब चीज़ें। Then we have got a pH manometry lab, pain clinic, and a simulation lab for training. So this is the medical college. In the medical college, it's a 150 seat recognized college and 250 seats permitted college with all MDMS and diploma courses with total of 145 seats, and all the MDMS subjects में हमारे पास में PG है. Then we have got super specialities in around 13 subjects with 29 seats, and we have got the PhD in general surgery also. So this is the dental college. So in the dental college we are a recognized dental college for 100 seats, और हमारे पास सभी subjects में PG है which MDS course, and these all courses are recognized also. And this is the nursing college which has got basic GNM, ANM, BSc nursing college, PhD and MSc courses. Then we have got a paramedical science college with occupational therapy, physiotherapy degrees, DMLT,
and OT technician के लिए diploma and certificate courses for the OT and the X-ray technicians. Then these are the other institutes with Institute of Speech and Hearing running a BSLP course and a Journalism and Mass Communication College with BA Multimedia and Animation, Journalism and Mass Communication, and Animation and VFX Gaming. And this is the C. Aurobindo Institute of Law, which was recently inaugurated. We have got BA LLB, LLB and LLM and PhD also. And I just want to show you a video. जैसा कि कोविड में मेरे पूरे स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स ने जिस तरीके से काम किया है, मैं एक वीडियो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सो थैंक यू एवरीवन. ये वीडियो जस्ट एक चीज़ दिखाने के लिए थी कि डॉक्टर्स कितने सक्षम हो सकते हैं, कितनी शक्ति चाहिए हर चीज़ को ट्रीट करने के लिए और किस तरीके से सब लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया था. और इसलिए आप लोग सबको मैं वापस बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोग सब डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. थैंक यू एवरीवन. Thank you.
Thank you, sir. Indeed, Sri Aurobindo University has given a lot to society, and I wish, on behalf of SAU, every passing MBBS batch can give back to society what they have learned at this college. Next, I would like to request Dr. Mohit Bhandari, sir, Pro-Chancellor SAU, to deliver his address. Respected Ramakant Panda sir, our chief guest for the function, Chancellor Madam, Vice Chancellor Madam, respective deans of medical and dental colleges, Registrar Saab, Dr. Bose Madam, my own teacher and teacher of several generations, Dr. S.D. Joshi sir, founder chairman sir, our teachers of the dais and on the dais, both, and dear students. एक बड़ा ही स्पेशल मौका है आज का, बहुत ही फैंटास्टिक मौका है जिस पे मुझे बोलने का ऑनर मिला है. आई एक्चुअली व्हेन दे आस्क्ड मी टू स्पीक, मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ बोलना डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, क्योंकि बोलने वाले जो लोग हैं स्टेज पे, डॉक्टर भंडारी अभी महक पूरी जर्नी आपको बता रहे थे कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी से मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा सफ़र तय करना, अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके सामने ऐसे लोगों का उदाहरण यहाँ पर है, और दूसरे जायंट जो स्टेज पर हैं डॉक्टर रमाकांत पांडा, ऐसे लोगों के बीच में यदि मुझे बोलने का अवसर मिला है, सो आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड, आई डोंट डिज़र्व इट. बट चूँकि आप लोग इस नए प्रोफेशन में घुस रहे हैं, आई थॉट मैं थोड़ा सा अपना, बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में. आई एम जस्ट 1998 आई एंटर्ड इनटू माय MBBS. बोस मैडम एट दैट टाइम वाज our dean and the head of the department of physiology. तो आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हैं उन्होंने हमको भी पढ़ाया है. 1998, this is 2022, so I'm not very new to this specialty, not old either, but जितना मेरा छोटा एक्सपीरियंस इस स्पेशलिटी में है, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि समय बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड. जब डॉक्टर पांडा या डॉक्टर भंडारी प्रैक्टिस करते थे, या जब वो MBBS में एंटर हुए थे, वो एक अलग समय था. जब हमारी जनरेशन मेडिसिन में एंटर करी, वो एक बिल्कुल अलग समय है. अब आप जब एंटर कर रहे हैं, वो बहुत अलग समय है. तो आज के समय की डिमांड क्या है, यही क्वेश्चन आपके मन में होगा कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू बी सक्सेसफुल. मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में नॉलेज तो नहीं है कि सक्सेस कैसे आ सकती है, लेकिन एक छोटी सी बात जो मुझे आई, जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए. मुझे लगता है मेडिसिन हैज़ चेंज नाउ, और अब मेडिसिन में कंपटीशन बहुत है. इट वुड बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिटेस्ट वही हो सकता है जो मेडिसिन को एक मिशन बनाकर मेडिसिन को प्रैक्टिस करे. यदि आप लोग इस स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन में इसलिए आए हैं कि आपको वो सूट करता था, या प्रोबेबली आपको ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, या प्रोबेबली आपके पेरेंट्स चाहते थे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर स्पेशलिटी, हर प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है. मेडिसिन में स्पेसिफिकली आज डिमांड है कि हम डिजीज़ को एक मिशन बनाएं. तो आज आप एंटर कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, 4 नए सब्जेक्ट्स आएंगे. जब आप फाइनल ईयर तक आएंगे तो आपका एक्सपोजर क्लिनिकल सब्जेक्ट से होगा. हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत डिटेल्ड और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रिसर्च का इनफ स्कोप है. एक स्मॉल पीस ऑफ सजेशन, आप जब भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वॉट एवर यू आर एक्सपोज टू, आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि इनमें से कौन सी बीमारी जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ मुझे फैसिनेट करती है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आप अपनी आइज़ को ओपन रखें, अपने ईयर्स को ओपन रखें, अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने माइंड को ओपन रखें. Ask this question every day, which is that disease I am reading about fascinates me the most. हो सकता है आपको आंसर बाय द एंड ऑफ योर MBBS भी नहीं मिले, मुझे तो नहीं मिला था, बट आई केप्ट ऑन आस्किंग दैट क्वेश्चन टू माई सेल्फ. और जिस दिन आप में से किसी को आंसर मिल जाए, मेक दैट डिजीज द मिशन ऑफ योर लाइफ. पुट ऑल योर फोकस ऑन दैट डिजीज, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट हीलर ऑफ दैट डिजीज इन मेडिसिन. तो आज से आप स्टार्ट करिए. यू विल बी एक्सपोज टू हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस. आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, आपको एनाटमी का डिसेक्शन हॉल बहुत फैसिनेट करेगा.
आप सेकेंड ईयर में आएंगे, आपको पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस फैसिनेट करेंगे, आप थर्ड ईयर में आएंगे, आप पब्लिक हेल्थ पे जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ वर्क करने का बहुत स्कोप है। आप जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे, आपको मेडिसिन, सर्जरी सब फैसिनेट कर सकता है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इनमें से ऐसी एवरी डिजीज, एवरी स्पेशलिटी हैज़ अ स्कोप, कुछ छोटा बड़ा नहीं है, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज़ देयर टू हेल्प द पेशेंट्स। आपको कौन सी डिजीज़ फैसिनेट करती है? आज दिस क्वेश्चन में अभी भी मेरे पास कोई डॉक्टर आता है, ऑलवेज आस्क हिम दिस, आपको कौन सी बीमारी फैसिनेट करती है? व्हाट गिव्स दैट फीलिंग इनसाइड योर हार्ट कि अगर इस बीमारी को मैं ट्रीट करता हूँ, इट कैन बिकम द मिशन ऑफ माई लाइफ। सो मेक दैट डिजीज द मिशन ऑफ योर लाइफ टू ट्रीट योर पेशेंट एंड पुट ऑल योर फोकस इन डेवलपिंग द एंटायर स्किल सेट, वट एवर यू हैव इन योर कैपेसिटी, कि आप उसमें नंबर 1 बन सकें, बेस्ट बन सकें, और फोकस करके उस डिजीज़ के को अपना मिशन बना सकें। अगर आप अपना फोकस मल्टीपल चीज़ों के ऊपर रखेंगे तो ये साइंस जो है आजकल बड़ी कॉम्पिटिटिव साइंस हो गई है। द नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज्ड एंड सो देयर विल ऑलवेज बी द रूम ओनली एट द टॉप। सो इफ़ यू चूज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ डिजीज़ और उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करते जाते हैं, नॉलेज गेन करते जाते हैं, और उसमें आप ये कोशिश करते हैं कि आप उसमें वर्ल्ड का सबसे बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस मेडिसिन के प्रोफेशन को एंजॉय भी कर पाएंगे, सेटिस्फाई भी हो पाएंगे इससे, और इसको सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाएंगे। डॉक्टर पांडा इज़ ऑन द स्टेज। आई हैड अ क्रॉस रोड्स विथ हिम, आई थिंक इन ईयर 2008, 2009 I think so, when you came to AIIMS to operate Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of that time. And I got my MCH in CTVS surgery at AIIMS. At that time, my wife was with me and I was a MCH first year resident when you came into the department, and I was very fascinated. I just asked this question to everybody, that I am doing my MCH in this department, there are so many doctors, a doctor is coming from outside, and I asked this to my third year at that time. So my third year said to me that the guy who is coming to operate, the then Prime Minister Manmohan Singh ji, is one person who has a kind of requisite skill which nobody else possesses. And that was the time, वो समय वैसा था कि जब मैंने डिसाइड किया कि if we have to practice this speciality, we have to keep a pinpointed focus in a very small area. पर वो एरिया ऐसा होना चाहिए कि उस काम को जब हम करें तो उसके बाद कोई और उसको बेहतर तरीके से ना कर पाए हमारे से अच्छा. I learned that thing from Dr. Panda. I think when Dr. Jayashree Taparia was introducing Dr. Panda, she said that he has that world record of putting the maximum number of grafts. Now, जो लोग यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जिनको हार्ट सर्जरी के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं लिया है, मैं अनफॉर्चुनेटली अपने फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट हो गया एम्स से और मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी ज्वाइन कर ली. लेकिन मैंने डॉक्टर पांडा से जो सीखा, not because he's on the stage, I learned it at that time when I left AIIMS. Before leaving AIIMS, what I learned that वो जो सर्जरी थी, वो सर्जरी वहाँ करने वाला व्यक्ति जो था उसके हाथ में वो स्किल थी कि वो एक रिपीटेड सर्जरी करे हुए व्यक्ति को भी, जिसके हार्ट की हालत ख़राब है, मल्टीपल ग्राफ्ट्स लगा के उस सर्जरी की लॉन्गेविटी को बढ़ा सकता है. द ग्राफ्ट्स विच यू पुट, the more number of grafts you put, the more time you require, the more effort you put into maintaining the longevity of cardiac surgery. And that's a skill. Not everybody can do that. आप अगर किसी हार्ट सर्जन से बात करेंगे तो बच्चों को समझाने के लिए मैं समझा सकता हूँ, एक हार्ट सर्जरी में अगर वेसल ब्लॉक्ड है तो हमको बाईपास करना है. इतना तो सब बच्चों ने MBBS के पहले थोड़ा बहुत समझा होगा. उस बाईपास को आप इस तरह से करो कि आप इतने बाईपास कर दो कि वेसल कभी भूल कर भी ब्लॉक ना हो पाए. दैट इज़ डॉक्टर पांडा. So what we learned, or what I learned at that time, that if the institution जिसके आप एल्यूमिनाई हो, वो इंस्टीट्यूशन में यदि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट आता है तो आपको इनवाइट किया जाता है ऑपरेट करने के लिए. यहाँ पर हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी यदि अपना फोकस पिन पॉइंटेड रखेगा और सिर्फ अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ दौड़ाएगा तो वो डॉक्टर पांडा बन सकता है, एब्सोल्युटली बन सकता है. Dr. Panda made cardiac bypass the mission of his life. He decided that whenever he is going to do a bypass, he'll put his 100% into it. It doesn't matter whether the surgery takes 10 hours, 12 hours, 15 hours. But एक बार उस पेशेंट का bypass हो गया तो उसकी longevity इतनी होती है कि उसकी longevity को कोई beat नहीं कर सकता. Pick up a small area. आप कल से लेकर
आने वाले 5, 7, 10, 15 सालों तक रोज एक्सपोज होने वाले हो, छोटा सा एरिया चूज करना, कोई बहुत बड़ा एरिया चूज करने की ज़रूरत नहीं है। उस डिजीज़ के छोटे से एरिया को चूज करके उसका इतना नॉलेज ले लेना, उसी पे फोकस कर करके आपसे ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ का वर्ल्ड में किसी को ना हो, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन। आई हैव अ लॉट टू स्पीक, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ स्पीकर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ओवरवेल्म ना होना, एंड इस पूरे एटमॉस्फेयर को सोक इन करना, एंजॉय करना, और साथ में डिसिप्लिन्ड होकर इस पूरी फील्ड ऑफ मेडिसिन को आपको एक, जिसको कहते हैं कि हम जो करते हैं और जो रोज़ करते हैं वो हम बन जाते हैं। तो आप रोज़ एक्सेलेंस को प्रैक्टिस करें, अपना फोकस रखें, और इस देश का और इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। इसके साथ बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for your encouraging words. Now I would request Dr. R.R. Vavre, sir, Dean SAMES, to deliver his address. Thank you for inviting me. Very good evening to all of you. Honorable Chief Guest, Padma Bhushan, Dr. Panda sir. He is the Vice Chairman and Managing Director of Asian Heart Institute and Chief Consultant for Cardiovascular Thoracic Surgery. Founder Chairman SAMES, Dr. Vinod Bhandari sir. Chairperson SAMES and Chancellor Shri Aurobindo University, Dr. Manjushri Bhandari Madam. Vice Chairman SAMES and Pro Chancellor Shri Aurobindo University, Dr. Mohit Bhandari sir. General Secretary SAMES and Pro Chancellor Shri Aurobindo University, Dr. Mehak Bhandari sir. Vice Chancellor Shri Aurobindo University, Dr. Jyoti Bindal Madam. Director Medical Education SAMES, Dr. Mrs. S. Bose Madam. Principal Shri Aurobindo College of Dentistry, Dr. Kanteshwari Madam. Director Professor Anatomy, Dr. S. D. Doshi sir. Faculty members, my colleagues from Medical and Dental College, parents, and my dear friends. I welcome you all for your journey through Shri Aurobindo University at Indore. I hope you all must be experiencing a wonderful atmosphere in this beautiful auditorium. As it has been said by Mohit sir and Mehak sir that the white coat ceremony was started 10 years back in the year 2011 in this institute. So you are blessed to be in this institute, and you must grab this opportunity with both your hands to learn all the basic and high-tech clinical skills that will be taught to you throughout your undergraduate curriculum. I hope you will cherish these moments throughout your life. And remember this, my dear students, you will be designated as 2022 admission batch. So once again, I welcome you all and wish you great careers in your future life. Thank you. Thank you, sir. I would like to request Dr. Kanteshwari ma'am, Dean Dental College, to deliver her address. A very good evening to one and all. My heartfelt greetings to the esteemed chief guest and all the dignitaries on the dais, dear
colleagues, parents, and my students. It gives me an immense pleasure to be part of this white coat ceremony on this day. At the outset, I want to congratulate each one of you for choosing our institute. Whenever I get the chance to meet the newcomers, I ask them a question: why you chose our college? And I see that the most common answer is that they chose our institutes because of the discipline, strictness, and good clinical exposure. We also take feedback from the outgoing students. Again, there I see the common answer is that the students will be remembering our institute, their experience in our institutes, because of the strictness, discipline, and good clinical exposure. That time it gives us an immense satisfaction that we stood by what we committed for. We are committed for your development, not only as a doctor, but also as a good human being. Let me tell you, the education should not just be about acquiring a degree. Degree certificate is just a piece of paper. The true education must reflect in the way you deal with your patients, your family, your friends, and society at large. Without values, there is no meaning to life. And now, before I conclude my brief speech, I would say one thing which I generally ask all the newcomers to do. It's a process. You have come a long way. You endured a lot of hardship to reach this point. And your parents also have endured a lot of hardships and sacrifices to get you on this day. There must have been a lot of exchange of arguments. Parents scold you, get angry with you, and you get upset. And you in turn answer back to your parents, argue, and even they feel upset. So there will be a lot of resentments and exchange of thoughts while choosing the branch. That clash, conflict, I see that happening with every parent and child. Today, when you begin your new journey, I would ask each one of you students to talk to your parents today before you go to bed. Tell them how much you love them and thank them for whatever they have done to you, and promise them that you are going to look after them the way they did to you in your childhood. And I would request the parents who are viewing this program live that please forgive your children. If at all they hurt you, please forgive them and bless them. Without your forgiveness, they cannot just go ahead in life. You have to leave these resentments and bitterness and show your love and care for each other and move on with life. With this, I conclude my speech and I wish you all a bright future ahead. Thank you. Thank you so much, ma'am. I'd like to request Dr. S. Bose, Madam, Convener, MCI Regional Center, to deliver her address. सम्मानित मंच और इसी मंच पर विराजमान हमारे समारोह की गरिमा बढ़ाने पधारे हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल पद्म भूषण डॉक्टर रमाकांत पांडा जी, हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी, चांसलर डॉक्टर मिसेस मनश्री भंडारी, प्रो चांसलर्स, मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर मोहित एंड डॉक्टर महक, वाइस चांसलर डॉक्टर मिसेस ज्योति बिंदल, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर वावरे, डीन डेंटल कॉलेज डॉक्टर मैडम कांतेश्वरी और सभागृह में विराजमान हमारे सम्मानित वरिष्ठ गुरुजन, अभिभावक जन एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सेम्स परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वाइट कोट का ये समारोह
नए छात्रों का मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में प्रवेश करने का उत्सव है। यह स्टूडेंट्स को एक नई पहचान देता है और उनका सम्मानजनक प्रोफेशन में प्रवेश दर्शाता है। सेम्स के इतिहास में हमने 2010 में वाइट कोट सेरेमनी की एक कड़ी जोड़ी थी, जिसे हम यथावत निरंतर हर साल मनाते आ रहे हैं। प्रदेश का ये पहला कॉलेज था जिसने वाइट कोट सेरेमनी की शुरुआत की थी। वाइट कोट सेरेमनी एक्चुअली डॉक्टर आर्नल्ड गोल्ड के द्वारा सन 1993 में शुरू की गई थी। उनका कहना था कि वाइट कोट भावी डॉक्टर और रोगी के विशेष रिश्ते का एक प्रतीक है। ये वाइट कोट आज हमारे गणमान्य अतिथियों और आपके वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा इस विश्वास के साथ आपको पहनाया जाएगा कि आप सब में मेडिकल एवं डेंटल प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी और समर्पण से आगे बढ़ने की क्षमता है। ये डॉक्टर बनने की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप आज के दिन चिकित्सा व्यवसाय के तहत परमात्मा के मिशन में प्रवेश कर रहे हैं। आपके दिल दिमाग में पीड़ित मानवता के दर्द को दूर कर मुस्कान लाने का लक्ष्य होना चाहिए। आपसे आशा की जाती है कि आप इस वाइट कोट, जो कि साइन ऑफ प्योरिटी है, दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके महत्व को समझेंगे और इसकी गरिमा बनाए रखेंगे। इसको कभी मैला नहीं होने देंगे। पेशेंट की ट्रीटमेंट समर्पित भाव से करेंगे और स्पेशली समय की कदर करेंगे। सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अपने क्लासेस में रेगुलर अटेंड करेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा बच्चों, पर ऐसा ये बुरा मानने की बात नहीं है ना। आज तो हम वाइट कोट पहनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है बेटे। आप सब इस महाविद्यालय की, क्यों हम बोल रहे हैं कि आपको सब चीज़ें करनी हैं, आप सब इस महाविद्यालय की गौरवशाली ख्याति के सहभागी बन चुके हैं। इसकी ख्याति एवं गौरव में श्रीवृद्धि करने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। आपका आचरण व्यवहार इस संस्थान यानी महर्षि श्री औरोबिंदो की महानता, राष्ट्रभक्ति, गरिमा और ख्याति के सर्वथा अनुरूप होना चाहिए। जो बच्चे इंदौर में नहीं रहते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत वरीड रहते हैं, तो मैं सब पेरेंट्स को जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, गार्डियंस हैं या उनके माता या पिता, कोई भी यहाँ पे जो उपस्थित है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप जो इन नन्हे पौधों, नन्हे बोल दूँ क्योंकि हमारे लिए नन्हे पौधे ही हो, क्योंकि सीडलिंग्स तो वहाँ स्कूल से आई और आप अभी पौधे हो। इन नन्हे पौधों को सेम्स के प्रांगण में बोकर जा रहे हो। इनकी रक्षा करना, इनको माँ, पापा, भाई, बहन का प्यार देना, अच्छा खाना देना जिसमें माँ के हाथों की सुगंध महसूस हो, और इन पौधों को एक सुंदर फल फूल देने वाले वृक्ष में परिवर्तित करना अब हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप यहाँ से चिंता मुक्त होकर वापस जाएं। हर वर्ष की तरह मैं डॉक्टर विनोद भंडारी की मम्मी जी, उषा भंडारी मैडम, वो जो है मम्मी जी, वो खुद एक टीचिंग प्रोफेशन में रही हैं और हर फंक्शन में वो आती थी और अपना आशीर्वाद सब बच्चों को देती थी। कुछ अस्वस्थ होने के कारण वो हमारे में उपस्थित नहीं हैं और मैं आप सबको अपने मम्मी जी भंडारी की तरफ से और आदरणीय स्वर्गीय बाबू जी की तरफ से आपको भी वही आशीर्वाद देना चाहती हूँ जो कि जितने सालों से मम्मी जी यहाँ नहीं आ पा रही हैं अपने इल हेल्थ के कारण, और मैं देती आ रही हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि इस बैच के बच्चे भी उससे वंचित रहें। उनका आशीर्वाद इस प्रकार से है। प्रिय बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप सबको शिव की शक्ति, भीम की भक्ति, सूर्य का तेज, चंद्रमा का अमृत, गणेश की सिद्धि, चाणक्य की बुद्धि, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, राम की मर्यादा,
कुबेर की संपदा सदैव सुलभ हो। मम्मी जी और बाबूजी के इन शीर वचनों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये अध्ययन अवधि आपके और आपके पेरेंट्स के सपनों को साकार करे। आप ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करें। संस्था का नाम ऊंचाई पे तो है, लेकिन अब इसे आप और ऊंचाइयों तक ले जाएं। बस ऐसी ही आपसे एक छोटी सी आशा है एवं अपेक्षा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now I would like to request respected Founder Chairman, Sir Dr. Vinod Bhandari, sir, to please deliver his address. Dr. Ramakant Panda, sir. Respected boss madam, Dr. Joshi, sir. All dignitaries on dais, all faculty members, students, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में वाइट कोट सेरेमनी के। आज मैं कुछ अलग बात करने जा रहा हूँ जो ज़रूरी भी है और आपके पेरेंट्स तक भी मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों को जो फैमिली एडॉप्शन का प्रोग्राम दिया गया है, तो आज ये वाइट कोट सेरेमनी के बाद से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपके साथ है, जो जब तक आप फाइनल ईयर और इंटर्न तक जाएंगे तब तक वो पूरी फैमिली आपके कांटेक्ट में रहेगी और उस फैमिली को ऐसे फैमिली फिजिशियन डेवलप करना और वो आपका ध्येय होना चाहिए। और अगर उनका आपने दिल जीत लिया तो आप किसी भी पेशेंट का जीत सकते हो। इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब हैं। हमारे यहाँ 7-7, 8-8 जनरेशन के लोग इलाज कराने आते हैं। ऐसे ही डॉक्टर पंडा के पास एक ही फैमिली के पूरा परिवार जिसको ज़रूरत पड़ी वो बाईपास कराने आता है। तो आपको आज से ये सबक लेके जाना है यहाँ से। उनकी कोई सी भी ज़रूरत को, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, कभी फाइनेंशियल पार्ट हो, दवाइयाँ न मिल रही हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जो करके और वो रिपोर्ट नहीं मिल रही है टाइम पे, तो वो सब भी ध्यान रखेंगे। जब आप वो रखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, क्या जांच क्या होती है, क्या नहीं होती है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अभी जब 2-3 एग्जीबिशंस लगाई तो जो बच्चों ने अपना शो दिया है, मैंने मेरी लाइफ में ऐसा शो पहले कभी भी नहीं देखा था। और मैंने एक आपका वीडियो मेरे को भेजा गया था, मैंने मेरे कई साथियों के पास भेजा। सबका यही मैसेज था कि अगर ऐसी पढ़ाई और ऐसा बच्चों को नॉलेज है और ये सब समझने लग गए हैं तो ये कहीं भी ऊंचाई पे जाएंगे। जैसा डॉक्टर मोहित ने बोला, आप टारगेटेड काम शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूरे तुम्हारे लिए किसी भी रूप में जहाँ ज़रूरत हो, रिसर्च में ज़रूरत हो, किसी चीज़ में ज़रूरत हो, हमेशा तैयार है। यहाँ पर ऐसी कोई भी कमी नहीं महसूस होगी जो तुम नहीं कर सकते हो और नहीं मांग सकते हो। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। अब आपको प्रूव करना है, जो मुझे इस बेस से ज़्यादा विश्वास है, बिकॉज मैंने देखा उस दिन भी और अभी भी देखता रहता हूँ। अटेंडेंस वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं पेरेंट्स को सबको बता रहा हूँ। इस समय जितने भी बैठे सुन रहे हैं वो सुने और आप भी ध्यान रखें। दिवाली, दशहरा, होली, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, मम्मी पापा की बर्थडे, दादा दादी की बर्थडे, ये जो सिस्टम बने हुए हैं, इस सिस्टम से अब थोड़ा सा हमको अलग रहना पड़ेगा। हम एक दिन से ज़्यादा किसी भी त्यौहार को मनाने न जाएं। यहाँ मेरे बहुत सारे जूनियर्स बैठे हैं जिनने मेरे साथ काम किया है, ये गवाह हैं उस बात के। मैंने जब तक अपना रेसिडेंसी रही और जब तक मैंने वहाँ MY हॉस्पिटल में जॉब किया, मैंने कभी होली नहीं मंगाई, कभी दिवाली नहीं मनाई। हर बार ड्यूटी करता था, हर त्यौहार पे ड्यूटी करता हूँ। और आज भी मैं, आप देख लेना, मैं त्यौहार पे यहाँ ज़रूर अवेलेबल रहता हूँ। तो ये डेडिकेशन से जब काम करेंगे तो हमें कभी तकलीफ़ नहीं पड़ेगी।
एक चीज़ और बताता हूँ, जितनी भी फैमिली अडॉप्ट की या कोई भी पेशेंट कांटेक्ट में आए, उसको ये समझ के ट्रीट करना कि मैं मेरे परिवार के किसी मेंबर को ट्रीट कर रहा हूँ, उसको मैं क्या क्या तकलीफ़ें महसूस कर सकते हो तुम, वैसी महसूस करके इलाज करना, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। पढ़ाई तुम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगी, हमारे वक्त कम पढ़ना पड़ता था। सब्जेक्ट बड़े जल्दी जल्दी टाइम निकलता है, फर्स्ट ईयर 1 ही साल का है, सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, ज़माना सब स्पेशलिटी का है, इक्विपमेंट खूब आ गए हैं, तो रोज़ डे टू डे रिसर्च हो रही है, डे टू डे इक्विपमेंट बदल रहे हैं। लकीली आप जिस संस्था में हो यहाँ हर तरह का इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। मैंने अभी कुछ बच्चों को बोला था कि जाके देख के आओ वो गामा कैमरा में वो परफ्यूजन कैसे होता है हार्ट का। आई थिंक एक लड़के ने आके मेरे को बहुत अच्छे से बताया था, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एंड मैंने शायद जयश्री को नाम भी बताया था उसका। तो उस तरह हर अगर बच्चा करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट्स को जाके उसकी स्टडी करके अगर अपने काम की चीज़ें उसमें से एक्सप्लोर कर लोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं आएगी और हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I request respected Dr. Manjushri Bhandari Madam, Chancellor, Sri Aurobindo University, to deliver her address. Honorable Chief Guest of the Day, prestigious Padma Bhushan awardee, Dr. Ramakant Pandaji, Honorable Guest of Honor, Kumar Vijay Singh Ji, Forest Minister, but he could not be present here today due to some urgent commitments, but he has sent his best wishes to all of you. Respected dignitaries on the dais and off the dais, my dear students and their proud parents. At the outset, I congratulate my dearest student on this event of White Coat Ceremony for which they have been waiting for such a long time. The White Coat Ceremony was originally created by Arnold P. Gold Foundation in 1993. The Association of American Medical College highlights the White Coat Ceremony as an important rite of passage for future physicians with ritualistic Hippocratic oath. However, in India, NMC recommended that this ceremony be conducted for all the MBBS students with effect from 2019 batch with modified Maharshi Charak Shapath. My dear students, I feel immense pleasure to say that we have been practicing it for many years, even before the NMC recommendation. Those were held under the guidance of Dr. Mrs. Bose, Director Medical Education. And the best part is that it is done for both MBBS and BDS students. And this time it's special as we are doing it with 350 students. The value of white coat can be best known to the physicians, surgeons, medical or dental students. The white coat is not just worn professionally. It is also worn to protect the doctors from contamination while dealing with the patients. If you really want to know how society looks at this white coat, then just turn back and look into your parents' eyes, who are eagerly waiting to see their wards wear them today on this platform. Or look into the eyes of parents who walk into your hospital with hope and trust that he will be fine once under your treatment. I know it may not be very easy to save all the patients, but it is possible to complete application of your training and knowledge towards the patient care and giving your best. So dear students, on this day of white coat ceremony, I want you all to promise us, whenever you wear this coat, you will try to protect its dignity and its integrity. You won't let it stain with anything that is not in favor of patient's care. You will always wear it with sense of dedication
and gratitude towards your profession. You will wear to make your parents and teachers proud of your service to the society. At last, I conclude quoting something on a lighter yet very important note. In recent movies, there was a dialogue which lists different type of whites. Do you know which shade of white your coat is? It's white with symbol of purity, dignity towards being a health professional. I strongly believe that after this white coat ceremony, you will go back with sense of proud feeling and satisfaction. So, wish you all of you a very successful and happy learning journey. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I request Honorable Chief Guest Dr. Ramakanta Panda sir to deliver his address. Dr. Vinod Bhandari, Dr. Manjushri Bhandari, your Vice Chancellor Dr. Bindal, both Pro Vice Chancellor Mohit and Mohak, Dr. Bose, Dr. Joshi and all the dignitaries here, the faculties, parents and students. And this is the culmination of all your hard work for last 8, 10 years or 15 years of really hard work. Your parents have put in all their efforts to see that their dream of all of you getting into medicine and become successful. And this is a great day for all of you, and every moment you guys enjoy it. Because after this, the only thing that you'll enjoy is medicine, provided you love it. And this is a very, very important milestone in your life. And all the previous speakers already told you the significance of white coat, but I'll give you a little bit advice when you are standing at a very important milestone in your life. Now, first my advice will be, how many of you have watched that Kapil Dev Twitter? How many students, anybody watched that? He got a little bit flack about saying that now. Anybody has watched that video? Just few days back only, around a week, 2 weeks back there. Anybody knows about that? Any students raise hands? Knows about Kapil Dev got a little flack about telling. Yeah, what he was telling that, he said, I can't understand why a current generation cricketers say कि हमको बहुत stress हो गया है, हमको इतना stress है. ऐसे मैं तो कभी जिंदगी में देखा नहीं कि stress क्या होता है मेरे लिए. रोज सुबह में उठ के देखता था कि कैसे खेलूं. आज एक दिन बारिश हो गया तो मैं सोचता था कि अरे गया आज दिन सत्यानाश हो गया, मैं खेल नहीं पाऊंगा. ऐसे मैं जिंदगी में कहीं सोचा नहीं थी कि स्ट्रेस क्या होता है मेरे को क्रिकेट खेलने में. क्या आजकल आईपीएल वाले सब बोलते हैं कि स्ट्रेस होता है. ये बोलने के बाद ही गॉट ए बिग फ्लैग फ्रॉम एवरीबॉडी, सम पीपल, नॉट एवरीबॉडी, पीपल हु वाज अंडरस्टूड इन प्रॉपरली डिडंट गेट अ फ्लैग. ही सेड कि क्रिकेट मेरा ब्लड में है और आई लव इट. When I go to sleep, I love cricket. When I get up, I love cricket. When I play, I love cricket. तो मेरे को स्ट्रेस कभी हुआ नहीं जिंदगी में. And he was one of the greatest cricketer of all time. So the point I'm trying to tell you that if some of you probably are forced by your parents, I'm not going to ask you to raise your hands how many of you have been forced to do medicine, but majority of you want to do medicine. If you want to do medicine, first and foremost is medicine is going to be a very long journey for you, both in terms of reading, because you are going to do MBBS. After MBBS, I hope and wish that all of you do post-graduation. Then also wish that all of you do further super specialization. You will be doing 10, 15 years. That is not the end of your learning. That is the beginning of your learning. Because Dr. Joshi exemplifies that. For me, he is the youngest man here. He is not the oldest person. So, it is going to be a very long process. All your life will be reading and learning about it, because medicine is a lifelong learning process. Just after completing, your MBBS, post-graduation, super specialty, you think that is end. It's just the beginning of your learning process. So unless you love medicine,
it is going to be a very painful thing. I see a lot of kids coming to me for counseling, parents. I give you an example. Both my children didn't want to do medicine because I didn't want to force them. Because they didn't want to do medicine. I didn't want to force them. So if you must love to do medicine, that's the most important advice I'll give you. And some of you have been forced by your parents to do it. I'll not tell you to raise your hands. Do your medicine, because this is one of the best ways to learn how to, lot of human faculties which no other specialties, no other engineering, etc. will teach you. Compassion, empathy towards people, learning how to listen to people. So these are things will help you. So after you do your MBBS, you can get into do civil services. Somebody can become big entrepreneur, do anything you want to do, but complete your medicine. Those of you who really want to do medicine, first and foremost, love it from your heart. The moment you love from your heart, it is never going to be tiring. You can read 16 hours a day, you will be doing your clinical duty hours. Even when you do post-graduation, you will be doing 24 hours, 36 hours, like if, of course, nowadays it changed. We got trained, when we got trained in cardiac surgery, we used to go home, start 5 o'clock in the morning, get up 4:30 in the morning, by 5 o'clock we leave, drive half an hour. I'm talking my experience in USA Cleveland Clinic. Reach there by 5:30. All day you work. Evening, after surgery, you come back. All night you look after the patient. No time to sleep, no time to eat. You just grab 2 o'clock in the night, go and grab quickly some Coke or some sandwich somewhere. 5 minutes eat, and then you are working. Next morning again, the next batch comes, 5:30, you hand over to them, go to operation theatre, go home after 36 hours. By the time you go home, if somebody asks your name, you don't remember even your name, what is your name. But that was the most beautiful moment, period of my life, because I learned. Same way, all of you, my foremost advice is love medicine. If you love, all your years will be great. You will always look at Dr. Joshi, Dr. Bose, Dr. Bhandari, all the whole Bhandari clan as your examples. Second thing, when you get into clinical years, don't just read theory, because yes, you need to get into, I don't know what is the new exams, the NEET and all that, you need to get into post-graduation, etc. But learn from your patients. Your patients are your biggest teacher. Some of the earlier speakers have already told you how important it is. Learn from the patients. It is not only listen to them. Learn how to listen to people. Learn what is empathy. Just becoming the best student in the class is not going to make you the best doctor. The best doctors are the ones who are compassionate, who are empathic towards the patient, who listen to the patient, understand. You do that, you become a great doctor. That's the second very important thing. Third thing, when you do any specialty, don't get into the glamour. Don't get into the glamour to become a cardiac surgeon, a bariatric surgeon, neurosurgeon. You must love it. Or don't look at the peer pressure that somebody is doing, that my friend wants me to do it, do it. Do not do that. Again, whichever specialty you want to do, you must love it. You love it, rest of your life will enjoy it. All of them, I can tell you, must be working 16, 18 hours a day. I still work 16 hours a day. My day starts at 7, 8 in the morning, ends at 2 in the morning, 1, 2 in the morning. But we all enjoy because you love it. Just like Kapil Dev said, he had all kinds of injury because of his medium fast bowler. He got surgery, but every day he wakes up and he loves playing cricket. That is very, very important for all of you. The next important advice I'll give you is all of you are very intelligent. Getting into medicine today, everyone is intelligent. And I hope that all of you succeed. I hope that all of you one day put up 1-1 AIMS all over the country. And the only thing that is going to stop you from your dream is your imagination. Nothing else, because all of you are intelligent. So intelligence is not a problem. So what is going to be a problem is your dream and your relentless pursuit towards that. Whether you want to become the best doctor, whichever specialty, you must be relentlessly pursue that. Because there is something management principle, there is something like 80-20 rule. That 20% of it, that most important things constitute 80%. Same way, if you look at it, any specialty, it is only top 5 or 10%, 20% doctors
95% patients go to them. Only 5-10% of patients go to rest 80% doctors. So you need to focus, see that you are among the top 20%. And all of you are intelligent. Nobody is less intelligent than the person. The person who is the best becomes the best graduate is no more intelligent than the person who is scored the lowest. It's only your imagination, your dream, and your pursuit day in, day out, pursuing for your excellence. And if you think that, okay, he's working very hard, 18 hours a day, I don't want to do it, life is too stressful, as Kapil Dev said, I never knew what is called stressful in cricket. So life is stressful. You have to realize that you look at whichever you look at life. You look at life, it is very enjoying. You also look at it could be the most stressful thing. It all depends on you, because if you are the most successful people, doesn't mean that life is more stressful. The person who is the most successful, whether in whichever specialty, whichever field, has as much stress as the person who is the least successful. His stress level, person who is a daily laborer has his own way of stress, is no less. So don't think that working very hard, because trying to become the best doctor in a particular specialty is very stressful. It is your mindset. As long as you love it, it is not stressful. So these are my advices on this auspicious occasion of becoming, starting your career in medicine, the white coat ceremony. Again, I'll advise you, love medicine. Don't love medicine. After you finish medicine, do something that you want to love to do it. You can get into your admin, you can get into civil services, you can do something, whatever you are, become a big entrepreneur, big industrial, do something that you love. Be among the best. This is your mindset that is going to prevent you from becoming the best. There is no, age is no bar to learning. Your greatest example is right here. So, age is no bar, you need to learn all your life and be the best. And my best wishes. Enjoy and love medicine for the rest of your life. Thank you. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. So thank you so much, sir, for your encouraging words. Dear students, the moment has arrived for which you have been waiting for so long. Mark the ceremony as a personal transition. From being a common person, now you're entering the field of medicine, and therefore, my dear students, you must learn and display extraordinarily high levels of professionalism and empathy. Now, for the parents, families, it is an opportunity to feel pride and also a reminder that their loved one is going to be engaging in one of the toughest rites of passage. Dear parents and family members, your support and understanding will be essential for the next 4 years. So please cheer for your ward when they receive their white coats. Now, I request all the dignitaries present on the stage to please help cloak the white coats on students' shoulders. For this, I would call upon first 10 students of MBBS batch to come on the stage. I would like to call upon first 10 BDS students to please come upon the stage for cloaking of the white coat.
Thank you, respected dignitaries. You may take your seats. Thank you. Now for the memento presentation. Now for the memento presentation, I request Dr. Mehak Bhandari sir to please present a memento as a token of gratitude to our chief guest, Honorable Dr. Rabakant Panda sir. I request all the dignitaries to please take their seats in the front rows. Now I request respected faculty members, Dr. Jayashree Taparia Madam, Dr. Manjunath sir, Dr. Kavita Arati Madam, Dr. Rupa Chapawal ma'am, Dr. Deepa Nair ma'am, Dr. Sonali Agichani, Dr. Sarda Swapnil Kumar, Dr. Tanushri, Dr. Maithili, Dr. K.C. Srivalsan and Dr. Prachi Paliwal to please come on the stage for cloaking the white coat on the students' shoulders. Dear students, please come on the stage. Thank you, respected heads of departments and respected faculty members. Next, I would like to call upon Dr. Prachi Shaw ma'am, Dr. Pooja Reddy ma'am, Dr. Amit Verma sir,
Dr. Pradeep Chaudhary sir, Dr. Harish Gogare sir, Dr. Ashok Kumar sir, Dr. Ashish, Dr. Rituja Prakash ma'am, Dr. Supriya, Dr. Trupti, and Dr. Gaurav Sharad Pawar sir. Please come on the stage. Dear students, please come on the stage. Thank you, respected heads of departments and faculty members. Next, I would like to call upon Dr. Ajit Deshpande sir, Dr. Manoj Kela sir, Dr. Praveen Arora sir, Dr. Gunjan Kela madam, Dr. Naveen sir, Dr. Sonia Tiwari madam, Dr. Harshal Gupta, Dr. Mayank Rahul, Dr. Deepa Nair, Dr. Saket Jati sir, and Dr. Prachi Paliwal madam to please come on the stage. Dear students, please come on the stage.
Thank you, respected heads of departments and respected faculty members. Now I would like to call upon Dr. Neeta Nattu ma'am, Dr. Manjunath sir, Dr. Nutan madam, Dr. Sunita Mishra ma'am, Dr. Ankita Singh, Dr. Anurag Srivastav sir, Dr. Sushmita, Dr. Sandesh, Dr. Manisha Sharma madam and Dr. Prashant Mishra sir to please come on the stage. Dear students, please come on the stage. Thank you, respected heads of departments and faculty members. Next, I would request Dr. Anup Vyas sir, Dr. Poonam Kulkarni, Dr. Hemant Gadge sir, Dr. Anvesha Das madam, Dr. Pallav sir, Dr. Updesh, Dr. Pooja madam, Dr. Shraddha Jaiswal ma'am, Dr. Bhupesh sir and Dr. Geeti Wajdi Mitra to please come on the stage.
request dear students to please come on the stage. Thank you, respected faculty members, and congratulations, dear students. We at Sri Aurobindo University are so proud of you for all of the hard work that the white coat represents. Know that when you receive your white coat, we welcome you. We have confidence in you and your commitment to become a dedicated physician. Now, for the next part, for the oath-taking ceremony, I request respected Chancellor Madam, Sri Aurobindo University, Dr. Manjushri Bhandari Madam, to please come on the stage and help administer modified Maharishi Charak Shapath to all the first-year students of MBBS and BDS. My dear students, please stand up for the oath-taking ceremony. Dear students, as you all know, NMC has recommended modified Maharshi Charak Shapath instead of the Hippocratic Oath. Before we proceed with the Holy Shapath, you should know about the Charak Shapath. Maharshi Charak is a well-known physician of Ayurveda of ancient India. He has contributed his work, which is documented as Charak Samhita. He seems to have been the first one to strongly follow that prevention is better than cure. As per the Shapath, which starts with Odhvij, which means twice born, because for the first time one takes birth bodily from his or her mother, and second time takes birth spiritually with the education, publication influenced by the Guru. Every medical student and doctor should take this oath and put it on his or her working table. So, my dear students, keep your right palm on your heart and facing the virtual holy fire. Repeat the oath after me with full regards. During the period of study, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My action shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative and calm. I shall aim my full efforts
and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for sake of monetary or selfish gains, nor shall I entertain a desire for lust, greed or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial and polite. I shall use my experience in action, appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest development in the field, and widen my knowledge. I shall treat patient of gender other than mine in presence of relatives or attendants. When examining a patient, my discretion, attention and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not indulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request Dr. Kavitarati Madam, Head and Professor, Biochemistry Department, to kindly deliver vote of thanks. Good evening, everyone. All good things must come to an end for the best things to begin. Honorable Chief Guest, Dr. Ramakant Panda, Sir, Vice Chairman and MD of Asian Heart Institute and Chief Consultant for Cardiovascular Thoracic Surgery. Honorable Guest of Honor, Shri Kamar Vijay Shah, Sir, Minister of Forest, Government of MP. Respected dignitaries, dear colleagues, my dear students and their proud parents. Thank you. Thank you is not mere an etiquette, but it's a gesture that's full of emotions. And today, it's my privileged pleasure to propose the oath of thanks. It's a very famous saying in Sanskrit, Tena vina trinamapi na chalati, which means, without Almighty's will, nothing can ever happen. It's true. So I extend my first thanks on behalf of entire SAMES team to the God Almighty. We extend our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Ramakant Panda, Sir, who took his precious time out to grace this occasion. Sir, your presence and words have motivated all of us. Thank you, sir. We also extend our warm gratitude to our Chief Guest of Honor, Shri Kamar Vijay Shah, Sir, who, in spite of his major commitments, has made his presence felt through his blessings and best wishes. Thank you, sir. Our heart is filled with immense gratitude to our madam, from whom we learn elegance and perfection. It's our humble duty to thank our dear Chancellor SAU, Dr. Manjushri Bhandari, madam, for her constant encouragement and support. Madam,
Your meticulous inputs has helped us fine-tune all the events. Thank you, madam. We have always felt a sense of strong positive aura, and the surrounding is full of vibrance. It's because of constant motivation and immense support provided by our Honorable Founder Chairman, Sir, Dr. Vinod Bhandari, sir. Sir, we always bow in great respect to you. Thank you, sir. The energy, the charisma, and the enchanting activities galore in SAMES are all because of our two dynamic pro-chancellors, Dr. Mohit Bhandari, sir, and Dr. Mehak Bhandari, sir. Sirs, we all are greatly indebted to you both. Thank you, sirs. We thank our Vice Chancellor SAU, Dr. Jyoti Bindal Madam, for her keen observations, inputs, and micromanagement of event, which helps us take every step and every event a step closer towards a grand success. Thank you so much, ma'am. We thank our Registrar, Dr. Anand Mishra, sir, our Dean SAMC, Dr. R.R. Vavre, sir, our Dean SACOD, Dr. Kanteshwari Madam, for their full support and facilitation of all the resources. We thank our most senior professors, convener of MCI Regional Center for Medical Education Technologies, respected Dr. Bose Madam, and the most eminent professor, respected Dr. S.D. Joshi Sir and Dr. S.S. Joshi Madam, for guiding us through thick and thin. We thank Dr. Shilpa Bhandari Madam, Director Mohak IVF Center, and Dr. Shweta Bhandari Madam, Director Ayushya Center of Fetal Medicine, for continuous support every time. Thank you, madams. We thank our dear Dr. Jayashree Tapadia Madam, HOD Department of Physiology, Convener, Subcurricular Committee Phase 1. Madam, your enthusiasm is contagious, and we can't thank you enough for enthusiastically bringing all the things together and coordinating the event so well. Thank you, madam. A big gratitude to all the HODs, senior professors, and faculties of various departments who joined their hands and added the much-needed sparkle to this event. Thank you, one and all. We appreciate the efforts with a token of thanks to the event organizers, Dr. Varun Gupta, Dr. Satish, Mr. Yash Vijay Varghya, Master of Ceremony Dr. Kudrat Bhangu, and the entire team. The EDP department, student volunteers, electric department, catering are still working hard and certainly deserve our heartfelt thanks. Last but not the least, the batch of 2021 and 2022 MBBS and BDS students and their proud parents for making this event the most memorable and the most successful one. Before I conclude, once again, I would like to thank all those who have directly and indirectly helped us to be a part of this event and shaped it as it looked today. Thank you, one and all. Have a great day. Thank you so much, ma'am. We have reached the final segment of today's program. I request everyone to please stand up for the national anthem.